अहम खबर शामिल करते हैं। लाहौर के इलाके भाटी में मैन होल में गिरने वाली 10 माह की रिदा फातिमा का 15 घंटे बाद भी कुछ पता ना चल सका। बच्ची की वालिदा की लाश वाक़े के 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड सेवरेज लाइन से निकाली गई है, जबकि पुलिस ने जल्दबाजी में मुतासरा खातून के शौहर और 2 भाइयों को हिरासत में ले रखा। ताहम खातून की लाश मिलने पर ज़ेरे हिरासत अफराद को रिहा कर दिया गया है। इस वक्त जय वक़ुआ पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर बताइएगा, जय वक़ुआ पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? जी, माँ बेटी के मैन होल में गिरने के इस वाक़े को 15 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया गया। बच्ची की जो वालदा है सादिया, जिसकी उम्र 24 साल बताई जाती है, उसकी डेड बॉडी जो है वो आउटफॉल रोड के करीब सेवरेज लाइन से इस वक़ुआ के 6 मिल गई थी, लेकिन 10 माह की जो बच्ची है रिदा फातिमा, उसकी अभी तक तलाश नहीं किया जा सका, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 3 पॉइंट्स पर जारी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये वो जय वक़ुआ है या मैन होल है जिसमें माँ बेटी जो है वो रात गए गिरी थी। इसके अलावा आगे जो 3 चॉकिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें एक चॉकिंग पॉइंट आउटफॉल रोड पर है, दूसरा दाता दरबार के करीब और तीसरा मोहनी रोड पर, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू, LDA, वासा समेत दीगर इमदादी टीमें जो हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है। इस वक़ुआ को सील किया गया है। जो मुतासरा ख़ानदान है उनके 3 अफराद को पुलिस ने इस वाक़े के फ़ौरी बाद इस वाक़े को मशकूक करार देते हुए खातून के शौहर और 2 देवरों को हिरासत में लिए रखा, और बच्ची की जो वालदा की डेड बॉडी है वो मिलने के बाद इन ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा कर दिया गया था। 2 अफसरान को भी मुअत्तल किया गया है, क्योंकि उनकी जानिब से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि गफलत सामने आई थी। लेकिन इस वाक़े के 15 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। बच्ची की तलाश के लिए इन 3 पॉइंट्स पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि मुख्तलिफ जो कनेक्टिंग सेवरेज लाइन्स हैं वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि बच्ची जो है उसको तलाश किया जा सके। और जो मेन पॉइंट है अभी उसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो गैर मुतल्लका अफराद हैं उनका दाखिला ममनू करार दिया गया है, और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक ये तमाम टीम्स जो हैं, जिनमें वासा है, LDA है, रेस्क्यू है, ये यहाँ पर तैनात रहेंगी। वक्तन फ़वक्तन जो आला अहदेदार हैं वासा के, LDA के और रेस्क्यू के, वो जय वक़ुआ को विज़िट कर रहे हैं, सूरत हाल का और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा ले रहे हैं। ये ज़ेरे तामीर एरिया है सारा परिंदा मार्केट का, तो सबसे बड़ी जो रुकावट है या जो हर्डल कही जा सकती है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो यहाँ पर जो तामीराती काम जारी है वो है, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स जो है इस कंस्ट्रक्शनल वर्क की वजह से चौक भी हैं, इसलिए उन पॉइंट्स तक रसाई करने के लिए रेस्क्यू की जो सर्च ऑपरेशन टीम्स हैं वो मज़ीद यहाँ पर तलब की गई हैं। अभी 15 घंटे गुजर गए हैं ऑलमोस्ट, तो ये बताइएगा वजह क्या सामने आ रही है? 3 स्पॉट्स का आपने तो जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में कि जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन क्या वजह है, क्या मुश्किलात हैं? जो तामीराती काम है वो सबसे बड़ी मुश्किल है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते में, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स को जो है वो कंस्ट्रक्शन या तामीराती काम की वजह से खोदा गया था, और बहुत सी जो सेवरेज लाइंस थी वो इस तामीराती काम की वजह से डैमेज भी हुई हैं। तो रेस्क्यू का कहना है कि 25 रेस्क्यूअर्स जो हैं वो इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू की 10 गाड़ियां जो हैं वो इस स्पॉट पर और उन स्पॉट्स पर मौजूद हैं, जिनको कि इस स्पॉट के साथ कनेक्ट करके वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक मज़ीद एक्सपर्ट्स जो हैं वो तलब किए गए हैं, ताकि मज़ीद उन पॉइंट्स का तयन किया जा सके जो कि इस जय वक़ुआ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं या इसके साथ मुल्हिक हो सकते हैं। इस स्पॉट के जहाँ पर मैं ये खड़ा हूँ, मेरी दाएं जानिब जो है वो वक़ुआ है, वो मैन होल है जहाँ पर माँ बेटी गिरी थी, जबकि मेरी बाएं जानिब एक बहुत बड़ा नाला है जो कि इस भाटी गेट और मुल्हिका इलाकों के सेवरेज का पानी उसमें गिराया जाता है। और परिंदा मार्केट की कंस्ट्रक्शन के दौरान इस पूरे एरिया को, यहाँ पर जो तजावुज़ात थी, उनको डिमोलिश किया गया था, और उसका मलबा भी इसी स्पॉट पर अभी तक पड़ा हुआ है। मलबा भी इसी स्पॉट पर पड़ा हुआ है, तामीराती काम जारी है। यही बेसिक और बुनियादी चैलेंज है रेस्क्यू के तमाम तर अमल में। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपसे वक्तन फक्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। आपको बताया कि NHA का अहम इक़दाम, करतारपुर और ननकाना साहब को मोटरवे से मुंसलिक करने का फैसला कर लिया गया है। अहम फैसला किया गया है और सियालकोट से करतारपुर मोटरवे की तामीर के लिए काम शुरू करें। वफाकी वज़ीर मवासिलात ने ये अहम हिदायत जारी की हैं। नई मोटरवे को गुरु नानक एक्सप्रेस वे के नाम से मंसूब करेंगे। करतारपुर हाईवे के गिर्द 3, 4 और 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। तो सिखों के लिए एक तोहफा वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से सिख कम्युनिटी के लिए तोहफा है। सिख कम्युनिटी की सरमाकारी के लिए लंदन, कनाडा और अमेरिका में इश्तहारात देंगे, ये कहना है अब्दुल अलीम खान का।
सिखों के मुकद्दस मकामात के लिए NHA आलमी सतह पर मार्केटिंग करेगा। NHA के ननकाना साहब और करतारपुर के मंसूबे गेम चेंजर साबित होंगे। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने यह कहा है। NHA उन मंसूबों को आलमी रोड शो में भी शामिल करेगा, ये भी उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल, NHA का अहम इकदाम करतारपुर और ननकाना साहिब को मोटरवे से मुंसलिक करने का फैसला है। ये सियालकोट से करतारपुर मोटरवे की तामीर के लिए काम शुरू करे। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जानिब से ऐसा कहा गया है। नए मोटरवे को गुरु नानक एक्सप्रेस वे के नाम से मंसूब करेंगे। Forum from 20 to 22nd January. The Prime Minister held multiple substantive engagements, including participation in the World Economic Forum annual gathering of world economic leaders. The session was titled Restoring a Spirit of Dialogue in a Divided World. On the sidelines of the WEF, the Prime Minister met Ms. Christiana Georgieva, Managing Director of the IMF, and addressed Pakistan's breakfast at the Pakistan Pavilion. During the visit, Pakistan, along with 7 other Arab Islamic countries, including Egypt, Indonesia, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, and Turkey and the UAE, joined the Board of Peace as part of the ongoing efforts to support the implementation of Gaza Peace Plan under the framework of the United Nations Security Council Resolution 2803. Pakistan, along with these 7 countries, also issued a joint statement on the occasion, which I'm sure you covered and is available on our web portal. This week, the President of Pakistan, His Excellency Mr. Asif Ali Zardari, is undertaking an official visit to the United Arab Emirates from 26th to 29th January. On the 27th January, the President met with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and the ruler of Abu Dhabi. The two leaders discussed ways to further deepen the long-standing and brotherly relations between Pakistan and the UAE. They reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and explored new opportunities in trade, investment, energy, infrastructure, technology, and people-to-people exchange, highlighting the significant potential for expanding economic and strategic partnership. President Zardari highlighted the significance of His Highness President Al Nahyan's recent visit to Pakistan and expressed hope for continued support for strengthening bilateral ties. Both sides also exchanged views on a range of regional and international developments and reaffirmed their commitment to promoting peace, stability, and sustainable development. The visit of President, subsequent to the recent visit of the UAE President, reflects the deep brotherly ties and mutually rewarding partnership between the two countries. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Muhammad Ishaq Dar also had a busy last 2 weeks. He accompanied the Prime Minister first to Davos for the World Economic Forum meeting, and this was during the 22 to 22nd January 2026. On the sidelines, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister met the Foreign Ministers of Canada, Finland and Thailand. He also met with the President of International Committee on Red Cross and Red Crescent, and we released the brief accounts and readouts of these meetings, which you all covered. The DPMFM also inaugurated the Pathfinder Group's Pakistan Pavilion. He appreciated the initiative to showcase Pakistan's vast economic potential and emerging opportunities on a global platform, while highlighting the dynamism and innovation of Pakistan's startups. He underscored the critical role of startups in advancing socio-economic development and driving innovation process in diverse sector, and he reaffirmed the government's commitment to facilitating and promoting entrepreneurs and startups, particularly those led by youth, to fully realize Pakistan's economic potential. On the way back from Davos, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister made a brief stopover in the UAE to meet the Chairman of the Department of Finance, Abu Dhabi, and Secretary General of the Abu Dhabi Supreme Council for Financial and Economic Affairs, also the Chairman of Etisalat and Vice Chairman of Abu Dhabi Holding Company.
During the meeting, the two sides explored opportunities to increase investment, UAE investment in Pakistan, and exchange views on broadening and deepening trade and economic relations to unlock greater mutual prosperity. Discussions also focused on Etisalat's ongoing investments in Pakistan and its plan to expand its footprints through flagship stakes in Pakistan, telecommunication company, that is the PTCL. They exchanged perspective on resolving long-standing issues, reiterated to PTCL's operation and future growth. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister emphasized the need to promptly settle remaining issues and collaborate closely to enhance bilateral economic relations, build on historic goodwill, and open new avenues of investment, trade, and joint ventures. The UAE side expressed full agreement and reaffirmed their strong commitment to advancing shared objectives, and both sides agreed to pursue joint efforts to expeditiously resolve outstanding matters in this regard. The DPM also had telephonic conversations, a number of them during this week. But before that, let me also elaborate on the visit of the Foreign Minister of the Republic of the Union of Myanmar, His Excellency Than Sue. In his meeting with the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, with his Myanmar's counterpart, the full gamut of bilateral relations were reviewed. It was decided to expand cooperation across diverse sectors, including religious tourism as well as people-to-people contact, cultural exchanges, with a view to promoting shared prosperity. They also exchanged views on regional and international peace and security and agreed to remain in contact on matters of mutual understanding. Both sides signed MOUs on political consultation and this will facilitate a regular dialogue on bilateral, regional and institutional issues. Now moving to the DPM's Foreign Minister's telephone calls this week. Firstly, he held a telephone conversation with the EU High Representative and Vice President Kaya Kallas, welcoming the positive momentum in Pak-EU relations. Both leaders discussed ways to further deepen bilateral cooperation. They also exchanged views on recent regional international developments, including Iran. The DPM reaffirmed the importance of sustained dialogue and engagements, and both sides agreed to remain in close contact. The DPM also spoke with the Iranian Foreign Minister, Mr. Abbas Araghchi, twice this week. The two leaders exchanged views on current regional and international developments. They also discussed the current situation in Iran and wider region. The DPM-FM expressed hope for peace and stability, and both sides agreed to continue regular consultations on matters of mutual interest. The DPM spoke with the foreign ministers of Egypt, Dr. Badr Abdul Ate, Saudi